Simran and welcome back to my YouTube channel. So as you guys have seen in my thumbnail that today I'm going to recreate Deepika Padukone's look from Ram Leela जो कि फिल्म आई थी 2016 में. I know that काफ़ी ज़्यादा old हो चुकी है ये फिल्म but still her look is iconic. So that's why I'm going to create her look. And she is my one of favorite actress because she has so much of sharp features. So she's my one of favorite actress. So that's why I'm recreating her look. So in today's video, I will try to make my look like her. So guys, without further any ado, let's begin to the video. So basically guys, I'm going to recreate this look. So in this look, Deepika has done so much of light makeup. So this kind of makeup I'm gonna do. So firstly, I will apply some foundation on my face. So I'm gonna use this Fit Me foundation, जो कि है 185 warm nude shade में. So I'm gonna use this foundation. मैंने मेरे फेस को प्रेप कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लोशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम फाउंडेशन ऑन माय फेस. जस्ट बिकॉज शी हैज़ डन सो मच ऑफ लाइट मेकअप, इसलिए मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज करूँगी. आई डोंट वॉन्ट so much heaviness on my face, so that's why I'm going to apply a very light kind of foundation on my face. And this is the wet blender, so I'm going to blend my all foundation with this blender. गाइज मैंने अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड नाउ इट लुक्स गुड. सो अभी मैं कोई भी कंसीलर का यूज़ नहीं करूँगी मेरे अंडर आईज में क्योंकि आई डोंट वांट दैट हेवीनेस. सो दैट्स व्हाई आई विल टेक ओनली वन लेयर ऑन माय फेस. सो यस, I will just set my under eyes with the help of compact powder. So I'm going to use compact powder and I'm using this compact powder which is Lakme Absolute. So yeah, I'm using this Lakme compact powder. मेरा बेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम प्रोडक्ट से किया है. लाइक शी हैज़ डन सो मच ऑफ लाइट मेकअप. एज यू कैन सी माई बेस इज़ कम्प्लीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज. सो आईब्रोज को मैं उतना ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि मेरे आईब्रोज जो है वो ऑलरेडी डार्क है. सो आई विल जस्ट फील देम अ बिट. सो या also completed my eyebrows. So मैं अभी मेरा आई मेकअप करूँगी like her. So she has used some glittery kind of eyeshadow, like golden kind of eyeshadow she has used. So I'm also using this kind of eyeshadow. So I'm going to use this shade, like this shade I'm going to use.
सा अच्छा लुक आएगा। कैन सी गाइज मैंने मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल अप्लाई सम मस्कारा ऑन माई आई लैशेज। सो मेरा जो लुक है आई मेकअप वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ आई विल अप्लाई सम मस्कारा ऑन माई आई लैशेज। My eye makeup and for the blush she has used a very nude kind of blush, so I'm using this lipstick for the blush. I will highlight my cheeks a bit. So guys, now it's time for a lipstick. So I will use a lipstick. This lipstick I'm gonna use Maybelline lipstick. So I'm going to use this Maybelline New York lipstick in the shade of 507 Almond Pink. So yeah. My makeup is totally complete. So guys, Leela's look is totally incomplete without her jewelries and her hairstyle. So now I'm going to do my hairstyle and my jewelries. So yeah. Guys, this is my final look. I tried a lot to make my look like her, and this is the result. So guys, if you think this video is good or I did a good job, then please subscribe to my channel, and thank you for watching.